एक मिनट या सभी भाइयों बहनों का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। एंड जैसे हमने रिसेंटली दृढ़ निश्चय किया है कि हम लोग लिवरपूल के गेम्स भी रिव्यू करते रहेंगे, तो मेरे साथ आज की पैनल में है हमारा ओक्लाहोमा का जूम प्रोवाइडर रोशन समेरनम, हमारे न्यू स्टार ऑन द ब्लॉक कृष्णा राजानी, जिसके लिए मतलब पब्लिक से डिमांड काफी आ रही थी आफ्टर हिज ओले पॉडकास्ट। एंड give a big hand for part owner of Liverpool Football Club, Anmol Javeri, making his debut on LFC Ahmedabad podcast. So, Anmol, you own multiple Mercedes, you own multiple BMW. I mean, तुमने पूरी दुनिया घूमी हुई है, तो फाइनली जब भी तुम LFC अहमदाबाद के पॉडकास्ट में आ रहे हो, तो कंपेयर टू ऑल दोस अचीवमेंट्स तुमको कैसा लग रहा है? I think this is the biggest honor मेरे लिए personally. It's a privilege that ये Right. platform है मुझे. So I'm looking Right. forward to the podcast. Thank you guys. Thank सही you है. Alex for this Due chance. apologies to Kapil Sharma for stealing his joke. और getting straight into the game. मतलब मैच के पहले was anybody feeling nervous? साउथहैम्पटन है तो मतलब we were playing at home, but किसी को था ऐसा कि यार कुछ लफड़ा भी हो सकता है? I think Krishna was nervous maybe. I think with Liverpool, I think you were always nervous. So, but Yeah. I think the past few performances, I think I was quite confident. Okay. मेरे को अंदर से वही था कि अर्ली गोल चाहिए था मेरे को somehow, और वो एक बार मिल गया था आफ्टर 1-0. I was pretty sure कि अभी यही देखना है कि हमारे FPL प्रोस्पेक्ट्स ने गोल मारे हैं कि नहीं मारे. फिर उसके बाद मेरे को पॉइंट ड्रॉप करने का डर चला गया था. सो वो who are the main player and main कहते हैं ना the champions from this game as per you, Anmol? Obviously Robertson, I think man of the match for me. Yeah. Jota also. Also, I would like to touch upon Fabinho, but I'll talk about that later on in context of last season. Yeah. I'll talk about that later on. But Robertson, I think first 10 minutes he killed the game. Starting, I think 15 minutes thoda slow hua tha. I think even after the goal we scored, I think we were a bit sloppy. Starting 15 minutes midfield thoda non-existent tha. I felt they were creating chances. But I think 15 minutes ke baad, I think we were totally dominant. Thiago got into the game, Fabinho got into the game. Uske baad, I think Jota also super pressing. Starting mein throughout the game, he was fabulous. Salah, I would say thoda off tha passing uska aaj. He was trying a lot, but end thoda uska product nahi aa raha tha. Overall, Mane I mean, also, as usual, I think with Salah effort के पूरे marks हमेशा उसको मिलते ही है. obviously, but it's always about whether. Yeah. Last, I think he missed that one goal. I was looking for that Salah's goal in the second half, but but we got the goal. That's the most important thing. Absolutely. Yeah. Absolutely. Would you like to say anything about this whole Jota Simicas situation? First you, Anmol, and then Krishna. Jota Simicas, as in? Sorry, not Jota Simicas. Robertson Simicas. I think healthy competition is obviously fine, but Robertson is obviously our first team player. So, but like since we have seen in the last few years, this period is key for injuries. So if we maintain that, I think if we keep our starting 11 fit, I am very, very confident that we have a good chance of winning either the Premier League or the Champions League. The main is, I think, the key is keeping the starting 11 fit. So I think that is good in a way because Simicas has been performing superbly. I think eight games, 8 clean sheets, eight wins. So aisa I think stats hai. So I think Robertson had a few bad games, but he played amazing today. So I think thoda rotation to hoga because every three days fixtures. So that is good that both the left backs are in form. So it's good for. I mean, being a Liverpool fan, मेरे हिसाब से हमको कभी ऐसा लग्जरी रहता नहीं कि हमारे पास एक पोजीशन में 2 लोग हैं खेलने लायक और हमारे पास वो लग्जरी है. Somehow मतलब वो it's always like one of the best player in the world in that position, and then it's directly Billy the Kid. So the same situation is in centre backs also because we have Matt who was rested. Van Dijk last match में rest हुआ था तो that's good that thoda squad depth है. खाली forwards में thoda we are lacking,
I think we should be fine by next season. Absolutely. So, Krishna, quick question to you. If we are playing a very big match after a week, and let's say both the players are fresh for the game, who do you start? Robertson or Tsimikas? I will start Robertson. Okay. Big games are needed for big players are needed for big games. Okay. और रॉबर्टसन ने प्रूव कर दिया ऐसा नहीं है कि ये टू प्रूव एनीथिंग इट इज मतलब जो डिबेट हम अभी कर रहे हैं या कोई भी लिवरपूल फैन पास्ट फ्यू वीक्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी सी शिमिका पुशिंग रॉबर्टसन और रॉबर्टसन थोड़ा हिट एंड मिस था इस सीजन. अब किसी ने नोटिस किया हो या नहीं पता नहीं, बट रॉबर्टसन ऑफ साइड लाइन जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं कर रहा था, या उसको बोला गया था 2 फीट पीछे ही रहता. ब्रेंटफोर्ड गेम देख लो या ब्राइटन गेम देख लो, सो डिफेंसिवली ऐसा लग रहा था कि ही इज नॉट दैट ड्रिल्ड या थक चुका है यार, व्हाटएवर, हंगर नहीं है व्हाटएवर. और सिमिकास was showing कि उसको he wants to break into first team, and it is मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ जॉन बोल रहा है, बट अगर दोनों लेफ्ट बैक अच्छे फॉर्म में, इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस. बट फॉर बिग गेम्स आई विल चूज रॉबर्टसन बिकॉज ही हैज प्रूवन इट. हाँ, अब अभी तक ये भी था कि चलो सिमिकास के क्रॉसेस आ रहे हैं, रॉबर्टसन के क्रॉस 8 मिनट से नहीं थे, अभी वो भी आ गया, असिस्ट भी आ गया. तो वी आर बैक ऑन ट्रैक. इसमें कुछ ये कोई पता नहीं, कोई LFC अहमदाबाद का एडमिन था, शायद नहीं था, जिसने बोला था कि हम क्लॉप को समझा रहे हैं कि सिमिकास को स्टार्ट कराओ, बट क्लॉप ने बोल दिया रोबो इज रोबो, तो उसने दे दिया. इसलिए अब नथिंग टू डिबेट हियर. कोई भी स्टार्ट करे, वी आर ओके विद दैट. The other thing is though कि रॉबर्टसन पिछले 3 साल से he's been consistently playing all the games, and तो 3 साल का fatigue तो कभी तो आएगा. And it was just that you know you hit this patch of games where you're not confident like क्या करना है. Like sometimes you're questioning yourself, should I go front, should I stay back, and जब वो decision making clear नहीं होता, it shows on your passing also, and so you just need a break. And the good thing about Tsimikas is that you have someone who is Robertson-like. You don't have to change your system specifically. He plays exactly how Robertson plays, so the transition is easier. Generally, क्या होता है, हर एक player अपना flair लेके आता है, तो the manager has to adjust the team based on the player coming in. So like you see how Liverpool plays when Henderson plays in the middle as compared to Milner, right? तो वो हमेशा वो क्या होता है कि it's not easy to fix like in that specific game. So just having one person who you know has similar capabilities of a Robertson, it just helps. Like he can just blindly swap between them. He doesn't even have to look at like अच्छा ये technical game है, ये hard rock game है, ऐसा कुछ नहीं. Like they both fit really well, so it really works out well for Klopp. It is really good for us as well. Right. So डिफेंस से आगे बढ़ते हैं हम मिडफील्ड में. Word on our midfield performance. Vanmul was wanting to say something about Fabinho. Yeah, so Fabinho के बारे में like not this game, but I was relating to last season also. So I think Fabinho जब से आया है लिवरपूल की टीम में, I think he has been one of the most important players. Last season भी हमने देखा था, like we missed 3 players, the main centre backs, but I think we lost because Fabinho was pushed back to centre back. Yeah, I think because उसके वजह से उसका जो main role था that was exposed, the stadium role where he is performing amazingly well. Centre back में obviously had to cover up. So that key period between December to March when we had that very bad run जो हारे थे, उसके बाद I think Nat Phillips and Reece Williams and Kabak came in, and so Fabinho was back in the midfield position. So I think today also Fabinho, I think he spun Ward-Prowse को पूरा घुमा के उसने I think amazing trick करके उसने वो निकाला था, and made some key tackles as well. So I think for me, Salah से after Salah, I think
I rate Fabinho more than Van Dijk for me personally. I think Absolutely. he is a very, very important player for me in the team. Yeah. वो confidence एक रहता है ना, like just to know that at least for forwards to know someone is there to mop behind you. Let's say if you do a miss pass, and it helps for और डिफेंस को अलग सपोर्ट कुछ भी है तो फबिनो भाई आ जाएंगे. डिफेंस को भी एक तरीके से दोनों ही साइड पे ये रहता है. सेम लाइक जैसे सेंटर बैक्स को कॉन्फिडेंस आता है, एलिसन है पीछे. हाँ. तो फॉरवर्ड्स को भी पीछे वो है. But if you observe also, like what happens is हमारे जब दोनों wing backs आगे जाते हैं, then our center backs push a little wider, and then Fabinho sits in a little bit when we are building from the back. That's so we need that space down the wings, and so it just really helps. Like the team somehow works really well when Fabinho is just in the middle. Even his presence works. Like even if he's having a bad game, just having to know that Fabinho is there, वो confidence काफी matter करता है. I think Fabinho का मिडफील्ड में रहना ऐसा चीज है कि जैसे सचिन एक जमाने में नंबर 4 पे ओडीआई में खेलना चालू, नंबर 3 नंबर 4 पे खेलना चालू किया था. लाइक हमारे पास कुछ और ओपनर थे, हमने रॉबिन उथप्पा से शायद ओपन करा रहे थे. क्या सिचुएशन था आई डोंट रिमेंबर, बट वो वैसा चीज था. लाइक करने को 2007 राइट, 6-7 ऐसा ही कुछ पीरियड था. तो फिर क्या है कि मतलब तो फेबिनो क्या भला आदमी है, उसने सेंटर बैक में मना नहीं किया, बट द थिंग इज दैट ही बिलोंग्स इन दैट रोल, एंड व्हेन ही इज देयर ही इज there are very few players in the world who play as well as him. So what about Thiago क्या मतलब कुछ ऐसा वो शाकाला का बुम बुम वाले कुछ जूते पहने हैं, कुछ जादू वादू का लफड़ा क्या है? Like how is he scoring goals? And I think Bayern Thiago is back now. I think fully getting into his groove now since the last 3 games. I think he's showing his true what Thiago is. हमने किस लिए उसको साइन किया वो आई थिंक वो दिखा रहा है. कृष्णा, योर टेक ऑन थियागो? तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि थियागो इज नेवर अवे, मतलब बायर्न वाला थियागो. द थिंग इज इनिशियली व्हेन क्लॉप वाज fitting him in the system, he used him as someone who would move the ball quickly, so forward passes जल्दी करे, सीधा स्विच करे ट्रेंट को या रॉबर्टसन को या माने को. पर ही डिडंट यूज हिम एज क्रिएटर और गोल स्कोरर. उसके पास एबिलिटी है, बट समहाउ उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, या ही वाज रिजर्विंग हिमसेल्फ. आई डोंट थिंक ही वाज रिजर्विंग हिमसेल्फ. इट वाज क्लॉप हु वाज टेलिंग हिम के मूव द बॉल फास्ट, सीधा ट्रेंट के पास पहुंचा, ट्रेंट अंदर सीधा डालेगा बॉल, वन विल स्कोर. इस सीजन आई एम सीइंग के उसका रोल थोड़ा चेंज किया लगता है. मतलब सिर्फ वो बॉल तो वो क्विकली कर ही रहा है, बट ही इज टेकिंग दोस फॉरवर्ड पोजीशंस एंड शूटिंग एंड स्टफ. तो गुड टू सी हिम कॉन्फिडेंट. बाकी एबिलिटी वाइज तो मतलब वो 10 on 10 प्लेयर है. आई मीन मैं आज there was this one sloppy moment आज starting of the game only. he lost the ball, एलिसन ने बचा लिया, 1-on-1 हो गया था. बट मैंने सॉरी बोल मैं बोल रहा हूँ. मैं इतना तुम लोगों जितना अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, बट व्हाट अबाउट हेंडरसन्स पोजीशन? मैं उसको थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड पोजीशंस में भी देखना मैंने ऑब्जर्व किया है रीसेंट गेम्स में. सो इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न, या फिर ऐसे ही कभी थोड़ा मौका मिला और हेंडरसन आगे चला गया? ऐसा तो पिछले 2 साल से ही हो रहा है. लाइक for quite a while we have been seeing Henderson being more forward than more box to box, because पीछे Fabinho है, and then in front of Fabinho there is Thiago who can move the ball. So for Henderson he has to be in the right place and then do the right pass. And and then we have always known his shooting ability outside the box. So he's always been a screamer scorer. And so वो midfield overload जो हम बात करते हैं, this is happening. Like with these 3 people, it is actually happening. Like we are overloading the midfield, and we have that extra man outside the box, but not so far behind like he can't go for the second balls or anything. So I think it is a very, very tactical decision. I think Klopp would have wanted Henderson to play much forward, but previously with our midfield options, he had to play a defensive role.
But now with Yeah. Fabinho there, I think it's again like a Fabinho effect, you know. Like, he gets the chance to go forward without thinking that I have to, you know, think about my defensive duties. When you have that much of leeway, you can actually do much better. So I think last year to काफी prominent था in terms of Henderson being forward Yes. and like making Yes. things happen. ये I mean, I'm grateful कि धवल आज के पॉडकास्ट में नहीं है, अदरवाइज वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, तू मैच नहीं देखता इसलिए तेरे को पता नहीं है. So Krishna, you were saying something. There is a stat. I'm not sure how many matches, but Fabinho Thiago just start किया है. We haven't lost. Oh, I think the Fabinho and Thiago terrible season last season, but we need Fabinho Thiago for sure. Just one player. I think Henderson. If Keita is fit, Keita या फिर Ox अभी last 2-3 game से superb खेल रहा है. तो that one Thiago हाँ Fabinho मतलब Thiago तो 4-3 में भी खेले हैं, फिर भी we haven't lost. 4-3 में भी we haven't lost. I think और एक चीज Thiago मतलब they keep the ball like. What Thiago brings to the table is Coutinho जैसा, but still like playing a little farther behind your front three. He's not part of the front three, but does what Coutinho does. So it's just so much. You have two players in one, so he saves one space, and then we have one extra. Thiago does it better than Coutinho. His passes are so FIFA like. मतलब मेरे को उसके पास बॉल आता है ना, मुझे पता है कि where he's going to put it, and it's exactly where he puts it. Or it's just so good to see him when he's on song. You know, it's just so fun to watch him. Right. और मिडफील्ड से अभी आगे बढ़ता है फ्रंट थ्री में. एक तो ये जो फिर्मिनो का गाना इतना आसान है ना कि मतलब हमारे क्राउड ऐसे ही वो गाना गाते रहता है जब फिर्मिनो मतलब स्टेडियम में भी नहीं है तभी भी. And I think even after he'll be gone, we'll be singing that song. So, is it time that we get a song for Jota? Or should we have done that last? I think there must be some song. I'm sure अंदर लिवरपूल में तो होगा. But अभी इतना गुजराती के हिसाब से यार बड़ा जोटा के साथ मतलब है ना, मतलब अच्छी चीजें राइम नहीं होती है. होता ही याद आता है. But I think there is no doubt that there's no doubt that he's the best Portuguese player in the league right now. Absolutely. I mean, see, first is Jota, then second best Portuguese in the league would be Diogo Dalot. Diego Dalot, yeah, fantastic. Ruben Neves is a fantastic player. Yeah, we'll come back to Ronaldo later. Yeah. हाँ, तो ऐसे 7-8 प्लेयर याद करके हम बताएंगे. So anyway, what about Jota, and any special insights on him and the kind of game changing form that he's in? What would you like to say? The biggest difference between Jota and Firmino is just finishing. Like it is pure daylights. Firmino का work rate है, I completely understand, but the general frustration with the fans is आखिर में गोल चाहिए. Right, you need the goal, no? Like तुम passes, flicks और tricks से कितना ही दिल जीत लोगे, जीत चुके हो, हमें पता है. It's like you want a lucky bowler, है ना? वो मतलब तुम दिन में मतलब 12 बार तुमने उसकी outside edge miss की है ना, but अगर तुम full toss पे wicket ले रहे हो तो that is what is going to count. So Jota is a very good finisher. When you don't watch football, ऐसे cricket के analogy देते रहना पड़ता है. But Jota का in their context it makes sense, right? You know, Jota का I think he also was press करता है, वो Firmino के जैसा पीछे से करता है. Right. दौड़ के पीछे से he tries to get the ball. So Jota का I think that is also very useful. आज he was like दौड़ ही रहा, he was all over the pitch. Yeah. I think another basic difference between Jota and Firmino is Firmino ball carrier है, Jota is not a ball carrier, but he lays off the ball quickly. So if you see, he gets in the position. He always has his back to the defender, and then वो एक outside boot से ऐसे flick करता है या right foot से flick करके वो माने को देता है, and then he runs around the defender and makes the run in the box. And if you see, Jota is always in the box at the penalty spot. Like
that is a poacher instinct. That is where And you he- get the like, most lead. hit the ball with both feet. मैंने सुना है ऐसे कि पोर्टुगल की टीम में जब भी जोता खेलता है तो there are players who come up to him and take tips that how to position themselves in the box and मतलब ये ability है उसके पास जो है वो पोर्टुगल के किसी प्लेयर के पास नहीं है. So वो fox in the box वाला जो चीज है मतलब I believe he's been called fox in the box of Portugal team. So like fox in the box, कितने सारे players हैं. Lewandowski fox in the box. I think in right sense Giroud is a fox in the box. वो पूरा game effect नहीं करता, but he is in the right position to receive the ball and has a lethal finish. So that's the most important thing. And even after Firmino comes back from injury, I don't think he will be able to get into the team, depending on like how Jota performs or if Jota is injured. Firmino was in form, like before he got injured, he was scoring goals. वो form में ही था. अभी देखते हैं how. It's nice to have, again, this is one another position like where you Robertson Tsimikas. Like this is a bit similar to, but यहाँ पे है ना रॉबर्टसन सिमिकास में आई थिंक थोड़ा सा यूनानिमस ओपिनियन हो जाएगा कि रॉबर्टसन को खिलाओ बड़े मैच में या लाइक फर्स्ट चॉइस रॉबर्टसन. यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा स्प्लिट चॉइस रह सकता है अगर हम फर्मिनो की बात करें तो. अपोजिशन टैक्टिकल भी थोड़ा वो डिपेंड्स ऑन द गेम. हाँ, सामने कौन है, कैसा खिलाना चाह रहा है. तो बट आई थिंक अभी अगर आ रहा है तो उसके लिए आई थिंक दोनों ही स्टार्ट करेंगे. African competition. I think if a team sits back, then they will prefer Firmino because we need to break that line. But if it is like the other team is also going to go for it as much as you are, then you have space, and Jota utilizes space really well. So I think अच्छा है अपने लिए. We have that flexibility, depending on the opponent, you can choose a forward player for yourself. Yeah. Or finally, हैंग हो गया. हेलो, आवाज आ रही है? आ गया. अभी म्यूट पे है तो. हाँ, am I audible? हाँ. Yes, मैं कह रहा था फाइनल हमारा आज का जो एजेंडा है, साला did not score today. So is it safe to assume that he is out of form and he needs to work on his finishing or something? I think. Well, he hit the corner flag, so he can hit that. I think the kind of form that he's in, मतलब मेरे हिसाब से वो साला का एक आध गोल तो ऐसा लिख ही लेना चाहिए. अभी I think वो मेंटली वो सेट हो गया कि दैट एक गोल नहीं हुआ तो साला ने गोल नहीं मारा, क्या इश्यू है ऐसा, है ना. बट मैंने सुना पिछले गेम में भी था, शायद उसके पहले भी था. मेंटल वो ब्लॉक हो गया है. मैं तो पोर्टो वाले गेम में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो मारेगा. मतलब वो चला गया, अरे मार दिया भाई ऐसा. लेकिन I personally think इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स है कि 200K में इतना ही मिलेगा. अगर ज्यादा चाहिए तो 500K वाला सब्सक्रिप्शन लग रहा है. नहीं मतलब it's not a fly on any मतलब John Henry, Von Henry जैसे मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर ये होता है सब्सक्रिप्शन में अलग अलग प्लान पे. हाँ, और मतलब साला जिस तरह से गोल मार रहा है ना, मतलब जॉन हेनरी को इतना ज्यादा गाली पड़ने वाला है. अगर मतलब अभी कैसा है कि लाइक 400,000 या see if I'm not like I've been watching Liverpool since 2005. I've seen Torres, I've seen Suarez, and he's better than both of them combined. ठीक है, let's make it clear, है ना. दोनों के ही साथ में we did not get trophies. Suarez के साथ हम लीग कप जीते थे, which was okay, है ना. And Suarez was good, but Suarez has so much nuisance value, right? मतलब we cannot deny that. Whereas Salah is a fantastic ambassador for the game, Liverpool, everything. So अगर ऐसा बंदा तुम्हारे से चांद सितारे भी मांग रहा है, so you should not really say no. You should say कि हाँ ठीक है करके बताते हैं. So मतलब I don't know if Liverpool and FSG somehow manages to let Salah go. I would like to see how John Henry and all the paid stooges spin that, है ना, कि भाई how it is in the greater interest and greater good. वो देखने लायक होगा. I think if Salah goes, it will only be I think for Mbappe or Haaland. I think I don't see otherwise Salah going, because I think he himself only said that he's very happy at Liverpool and he would like to see. The thing is exactly वही मेरा point है. वो तो सबसे खराब चीज है ना. Like FSG वाले अगर FSG वाले अगर मैं assume करे कि वो लोग evil है और ऐसा,
तो वो लोग सोचेंगे कि यार वो थोड़ा स्टर्लिंग वाला मैटर हुआ था ना, वैसा कुछ साला में हुए है ना, कि थोड़ा उसका मैनेजर कुछ स्टेटमेंट दे, फिर साला उसके मैनेजर को रोके नहीं, नो स्टफ लाइक दैट, जो पॉगबा बार करता है, ऐसा कुछ हो। बट उसने तो बोला मुझे तो रहना ही है, आई वांट टू रिटायर, लाइक But अगर See, साला इस तो केस फिर में क्या, I'll नाउ द एक I बॉल इज इन understand. कोर्ट। Yeah, I understand your point, but I think इस केस में, you know, if let's say we assume that Klopp actually has the say in these kind of things, I'm pretty sure they are going to ask you, okay, इस current squad में से कौन से indispensable है to Klopp, and I think they will take Klopp's opinion on whether do we do this, you know, like keep Salah and like pay him that much to keep him. And I know that Klopp is also a person who thinks about economics, right? So for someone like a Wijnaldum, when he was asking so much, he said like, ठीक है, मेरे को midfielder मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. At that time we were having Curtis Jones play, and then Fabinho was also playing really well. So वो बोला ठीक है, तू चला जा, तेरे को जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है तू निकल जा. But in case of Salah, I think Klopp would want to keep him, and then he will convince FSG to at least for him, for his sake, shell out that money. And I think with LeBron James's company like Redbird getting more money in, एंड I जवेरी think साहब सिटिंग देयर राइट just नाउ, for the brand value, you know, Liverpool brand value को maintain करने के लिए, jersey sales के लिए, you know, for all of that, you would have to keep Salah. It just makes so much sense. तुमने जो लंबा पॉइंट बोला है, मैं उसको जस्ट डेमोलिश करूं कि यार क्लॉप को चश्मे खरीदने के लिए बोलता है कि वाउचर अगले महीने पास करेंगे, अभी क्लॉप क्या ही बात करेगा यार. But you know, financially I think this is a situation for FSG. क्योंकि अगर चलो साला इज आस्किंग फॉर 400,000 पर वीक, तो चलो उसको दे दिया, ठीक है. तो नेक्स्ट आएगा लाइन में वैन डाइक खड़ा है, माने खड़ा है, दे विल आल्सो आस्क फॉर रेज के मुझे आई आल्सो वांट दिस मच, आई एम आल्सो विनिंग द सेम अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज, आई एम आल्सो पुटिंग इन परफॉर्मेंसेस. तो देयर आर प्लेयर्स वेटिंग इन बिहाइंड, देयर इज Fabinho वेटिंग, देयर इज Alisson वेटिंग, देयर इज Firmino वेटिंग. So and we need all these players. So if we this much amount to Salah, so all these players will automatically, not obviously they won't ask for 400,000, but they would ask for a little bit bonus. So I think FSG is taking this smartly. I'm sure they also want to keep him because it's an investment. What you're saying is very very true. What Anmol is saying is very correct. But चीज फिर वही आ जाता है जो रोशन ने बताया कि वाइनल्डम जैसा कोई बंदा बोलता है कल जाके अगर खीटा ने बोला कि देखो पिछले 6 गेम में बढ़िया खेला मेरे को 250 दो, so we'll be like okay, thank you memories and थोड़ा good luck for the future. But अगर वैन डाइक या Fabinho या एलिसन कह रहा है चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं खरीदने का ट्राई करता हूँ, ठीक है. या वैन डाइक अगर जा रहा है तो तुम ये नहीं बोलोगे कि यार हम मतलब ये रूबेन डियाज को ट्राई. द थिंग इज अगर ये 4-5 प्लेयर्स अगर है ऐसे लेवल के, सो उनके केस में भी दे डिजर्व द they are worthy of such hikes. कल जाके अगर currently we are financially इतना प्रॉब्लम है, तो that's why if अगर साला को दे दिया तो अगर if this finance thing is sorted, I think we should be fine with all. I think वो जो महान लॉजिक है ना, I don't know मोरिनो बताता है या कौन बताता है कि you मतलब keeping the players you have is also like a new signing or good signing, right? So I mean put the money where your mouth is. अगर तुमको ऐसे प्लेयर्स रखने भी है ना, तो यू वुड हैव टू गिव देम. और दूसरा क्या है कि जो प्लेयर्स हमारे अच्छे भी है, तो उसमें कुछ लोग 29-30 के हो रहे हैं, they would also want their last big contract, so they would not be entirely wrong if they are seeking money. I think what FSG could do is probably do like an incentive based contract for Salah as well, like they pay him this much, but for every goal, every assist, it could match them. I mean, it could hurt them because he will score so much that they will have to pay him probably like extra 200 every week, and then say, "अरे यार पहले ही दे दिया होता तो हो जाता." But I'm just saying there are ways to do. प्रीति और कोमल चौटाला के जैसे साला और माने अंदर एक दूसरे को धक्के मार के खेले फुटबॉल, लाइक वो अच्छा थोड़े लगता है यार. वे आर लिवरपूल फॉर क्राइंग आउट लाउड. कृष्णा, योर टेक ऑन एंटायर debate of this, you know, giving Salah whatever he wants or being rational about it. I don't think पैसे के लिए they will do it, right? Like for like
for money they will not let each other score. I don't think that is going to happen. वो rivalry तो अभी भी है, like अरे that बाबा rivalry. मैं मजाक ही कर रहा हूँ. When you're countering that ऐसे no I'm taking that as a comment. Let's say if that happens, then I'm like rivalry तो वैसे भी है, like even without contracts being that way, they still want to outscore each other, they still want to be the best. So ठीक है, let's see. I just hope this gets fixed. But the other thing is, like, you know, taking from Man United's hat when they just killed their wage bill just by, you know, like सबको पैसे दे के नहीं देखो, एक चीज है कि ट्रेंट को 200 के देना और वो क्या है उनका वो टिकटॉक वाला लिंगार्ड को 200 के देना, वो दोनों में फर्क है, समझो. If Liverpool doesn't pay 400k to Salah and he leaves, I'll, you know, attack FSG like anything. But if Liverpool pays 250k to Keita, obviously I'll also criticize them. I don't want them to pay. Yeah, sure. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं I also understand कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, and वो मैं समझ रहा हूँ, है ना. But उनका यूनाइटेड का खराब होने का वजह ये है कि उन्होंने किसी को भी दे दिया था, मतलब. Right. That was yeah. Krishna, your take on this entire thing? मेरा सिंपल है. As a fan, I want to see Salah staying for like next 10 years. और जीताए 5-6 टाइटल, ले जाए 5-6 गोल्डन बूट. आप पूरा टट्टी टीम खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बेच डालो. वीवीडी मेरा स्पेशल प्लेयर है, उसको भी बेच दो, आलिसन को बेच दो, किसी को भी खिला, कारियस को खिलाओ, साला को रखो. मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिवरपूल में है. this is like I don't do if buts and I do absolute वाला कहते ना मूवमेंट है ये. मतलब ठीक है, ये मेरे को सीईओ नहीं बनाने वाले, मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली सभी कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, सबको अपना प्रॉफिट देखने का होता है. बायर्न भी यही सोचती है, बार्सिलोना भी यही सोचती है. बट अल्टीमेटली व्हाट दे डू, मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन दे सी के एक टाइटल विनिंग टीम बन चुकी है, तो अभी खर्चा करो, कर्जा लेके खर्चा करो. अब अगर ऐसा है कि कर्जा बढ़ गया है तो सबको बेच डालो. बार्सिलोना ने वही किया. अभी आर्सेनल क्या कर रही है, 17-18 सालों के बच्चों को खिला रही है. तो शायद ऐसा पैच भी आएगा जब क्लॉप जाएगा, तो वो भी देख लेंगे. आपने में देखा ही है 13-14 के बाद जो 2-3 सीजन थी, भयानक सीजन, उसमें लैम्बर्ट को देखा है, बोरिनी को देखा है, बालोटेली को देखा है. वो इरा देख लेंगे. पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साला चला गया इसलिए वो इरा है. इट्स बेटर कि साला को रख के 2-3 टाइटल जीत के वो इरा है. तो सही बात है. आई फुल्ली एग्री विद इट. अगर 2026 में हम लोग 12 नंबर पे फिनिश, आई वुड बी हैप्पी. अगर हमने 22-23 कि हमने तब यार बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया था और फिर तो मतलब सब चीजें खराब हो गई, बट 22-23 में ट्रेबल जीते थे यार साला के साथ. लाइक आई वुड वांट दैट. फिर ठीक है ना यार, मतलब फिर से नीचे चले गए, फिर से ऊपर आएंगे, है ना. आई लाइक ले लेंगे, फिर वुडबर्न को खिलाएंगे 2-3 सीजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. I think अपना patch आएगा, as Krishna said, you know, there will be this time when you have to leave these players. It's financially not possible to keep them, and so let us enjoy it till we have them. Let us pray that they get all these trophies before they leave, and then if they win like 5-6 trophies in coming years, I'm happy. Next 10 years that I don't want, we can still rebuild and get back on track again. So it's okay. Any closing remarks you would like to give on today's match and upcoming derby, Anmol, because you are making your debut? Bas, I think we should go with confidence. Everton away. I think it's away. It's Everton away. So I think we should continue with this form. I would love to see Robertson start again. Then rest Robertson for the weekend, because Everton is a big game and Robertson knows the derby. You know how derbies are. So I think I would let Robertson start again. I think Matip will come in because Konate has started 2 matches back to back. So I think Matip will come back. I don't think Klopp will change the front three. And I think we should beat Everton comfortably because they are in a very bad form right now. Your prediction, very quickly, Anmol, then Krishna, then Roshan.
I think 3-1 Liverpool. Jota, Salah, and Mane, all three to score. Okay. Krishna? मेरा हमेशा का एक ही रहता है 90 plus 8 minutes साला का पेनल्टी. Right. थोड़ा melodramatic है पर ठीक है. I would take it. Yeah. ठीक है. मैं ये बोलूंगा, जनरली मैं जो बोलता हूँ नहीं होता है, तो जो मैं ये बोलूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग द ऑपोजिट टू हैपन. सो इट विल बी अ लेबर्ड struggling 1-0, 2-0, but we will win 4-0 for sure. So let's hope so. और मेरा भी कृष्णा जैसा ही कुछ सोच रहता है, मतलब ऐसे लास्ट मिनट वाला ओरिगी का गोल और ऐसा कुछ होता है तो आई वुड लव इट. So anyway, that's it from our side from Liverpool Football Club Ahmedabad, and as usual this video was brought to you by Yankees Jersey. Go get your home kit, away kit, third kit, whatever you want, and you can contact them on the details in the description. So good night. Thank you guys. bye guys, see you.